CG at Hyderabad, Akbar Sahab, Majid Sahab, Narayan Sahab, all the dignitaries. It gives me immense pleasure to be associated with this function. Urdu Journalist Gathering, तो आप इजाजत दीजिए मुझे थोड़ा हिंदी उर्दू में बात करने के लिए। दोस्तों, बहुत पहले किसी ने कहा था कि स्पीक अ लाई 1000 times and it becomes truth। अगर आप किसी झूठ को 1000 बार बोलिएगा तो वो हकीकत लगने लगता है। और सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म से अब इतनी ताकत हो गई है इस कॉन्सेप्ट को कि 1000 बार क्या, आप लाख बार 10 मिनट के अंदर उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा होगा, कितना नुकसान करने वाला होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज, आज जब सोसाइटी में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले से बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट हुआ है, और सेलफोन के जरिए सोशल मीडिया का रीच लगभग हर घर, हर इंसान के पास पहुंच गया है। तो ऐसे हालात में सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है हर एक इंसान की जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन है। और आज की तारीख में जिसके पास भी सेलफोन है, लगभग सभी के पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि एक अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसमें कोई भी चीज जो सेंसेशनल लगता हो उसको फॉरवर्ड करने के पहले 1000 बार सोचें। खुदा न खास्ते अगर वो सही भी है, अगर गलत है तब तो खैर दूसरी बात, लेकिन अगर वो सही भी है फिर भी आप उसको फॉरवर्ड नहीं करें। बहुत बार कुछ सही चीज को भी गलत समय पर अगर फॉरवर्ड किया जाए तो उसका इंपैक्ट नेगेटिव होता है। इसलिए इंडिविजुअल की जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत बड़ी है। पहला, इंटरनल विजिलेंस अपने लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद इस तरह के ग्रुप जो है, उर्दू जर्नलिस्ट ग्रुप, तेलुगु जर्नलिस्ट ग्रुप, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, उनका अपना एक जो इंटरनल विजिलेंस, इंटरनल सेटिस्फाइंग फैक्ट चेक का जो एक सिलसिला है, वो भी आगे रहेगा। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि ऐसे बहुत वीडियो सर्कुलेट हुए जिसका हैदराबाद या हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं। बांग्लादेश का वीडियो यहां सर्कुलेट हुआ, सीरिया का वीडियो यहां सर्कुलेट हुआ, चेचनिया का वीडियो यहां सर्कुलेट हुआ, जिसका हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं है कभी। तो जब कोई देश तरक्की करता है मेरे दोस्त, और जब देश की इज्जत एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ऊपर जाती है, तो दूसरे को पत्थर फेंकने का मौका मिलता है। और आज जब हमारा देश वर्ल्ड का 5th सबसे बड़ा इकोनॉमी है जीडीपी में, और आज जब हम लोग जो हमारे पुराने कॉलोनियल मास्टर्स थे उनसे हमारा जनरल जीडीपी ज्यादा हो रहा है, ऐसी स्थिति में अपने ऊपर और भी बड़ी जिम्मेवारी आती है कि जो भी चीज जिसमें सेंसिटिविटी रहती है उसको बहुत तरीके से हम लोग हैंडल करें। किसी भी सोसाइटी में किसी भी समय जरूर कुछ ना कुछ फॉल्ट लाइंस होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे जिसके कारण फ्रिक्शन हो सकता है। वो फ्रिक्शन किसी लोकल मोहल्ले में भी हो सकता है, किसी बड़े कॉलोनी में भी हो सकता है, कभी कभी बड़े शहर में भी हो सकता है। लेकिन हमारी मैच्योरिटी का सबसे बड़ा टेस्ट यही रहेगा कि एक एडवर्स सिचुएशन को भी हम लोग कितने मैच्योरिटी, कितने सीरियसनेस के साथ हैंडल करेंगे। तो आज नो अमाउंट ऑफ वर्ड इज इनफ टू एक्सप्रेस
the satisfaction and the gratitude to all the organizers, and particularly supported by the US CG here and the entire Thank you for being here for this important event. I especially want to recognize and thank colleagues and esteemed guests who are here with me today as well, Mr. Anjani Kumar, Mr. Alan, Professor Kohler, Mr. Majid, of course. Thank you so much. I would also like to take this opportunity to pay tribute to Mr. Zahiruddin Ali Khan, Managing Editor of CSI Daily, who passed away on Monday. He was a wonderful human being, an alumnus of one of our exchange programs, and he rendered great service to the Muslim community of this region. So I just wanted to pay tribute to him. So dear journalists from different media houses, I'm very happy once again to see Osmaniye University under the leadership of Professor Ravinder helping the media fight disinformation and fake news. As you all know, fake news and disinformation has become one of the more common threats to our societies and democracies. I say that around the world, in the United States too, of course. Attempts are being made to disrupt the peace and growth of our nations through false and purposefully misrepresented information. And these attempts are not just spontaneous, they're well planned. Elements working behind such ethical practices do not want democracy to prevail. Disinformation is not simple. On the contrary, it's constantly evolving and changing and getting more and more complex. We see that on social media, we see that on television, we certainly see that in the mainstream news as well. It's like every day we hear that bad is good, that more is less, that the right is wrong. I mean, it's just completely opposites. And together we need to work and figure out ways that we can combat that. So if journalists could be manipulated by tweaking facts, and they were to pass that same unverified information to the public, it becomes a real problem. The simple fact that is democracy rests on a free and open press, and if the press doesn't have correct information, they can't help us find out what the real information is. Which is why we think this training is so important, and why we've been happy to have done this with the Telugu group and then now with the Urdu group here. The objective has been to provide all of you, journalists, with enough tools and techniques, and I know that it sounds like the modules that you have done, it took more than 40 hours, but it sounds like it could have taken hundreds of hours. You seem to have covered so many different topics. We don't want any of us being the victims of conspiracies of disinformation. The basic job of a journalist is to verify that the news, and when they're looking at news from different sources, is to verify its authenticity and its truth. And we hope that this training has helped you become more adept at that. What you're learning now is not going to help your newsroom just be more responsible, but will help us create a network of well-informed and responsible journalists. We, of course, could not have done this without Osmaniye University, so thank you for your support and for helping us create an awesome batch of Urdu journalists who can join those who have already been trained. Thanks to each of you for taking time out, and this is a voluntary program, and you have full-time jobs as well, so taking time off and from after hours, weekends, things like that, to come together both online and in person. Really, really thank you for taking that time. Congratulations on finishing the program, and I look forward to seeing the work that you're doing going on in the future. And please know that the U.S. consulate here wants to continue to be a resource for you, as you now too are alumni of some of our programs. So thank you very much.